आज हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के इनविटेशन पर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। हम हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के बाहर। हम सर्किट के ऊपर भी गए थे और टाटा मोटर्स ने हमें बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई वहाँ पर अपनी हैरियर ईवी के साथ। अब इसके पावर फिगर्स, इसके ओवरऑल टॉर्क फिगर्स आप सब जानते हैं। 0 to 100 इन जस्ट 6 सेकेंड भी आप जानते हैं, लेकिन वो सब करने के लिए आपको रेस ट्रैक चाहिए। लेकिन रेस ट्रैक आपको हर मौके पे मौजूद नहीं होता। क्या मौके पे मौजूद होता है, क्या आपको मिल जाता है, वो है ऑफ रोडिंग सर्फेस। क्योंकि भारत में जब आप लेह लद्दाख जाते हैं या फिर कहीं आप जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, या फिर आप जाते हैं बारिश के मौसम में जब फ्लड्स हो जाते हैं अपने शहर में ही, तो आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। तो टाटा मोटर्स ने दिखाया कि क्योंकि इसके अंदर कॉर्ड व्हील ड्राइव है, यानी कि आगे ही मोटर है, आगे के एक्सल पे और पीछे एक्सल पे पावर्ड है, मोटर है इलेक्ट्रिक, तो चारों पहियों पे पावर जाती है। तो वो कॉर्ड व्हील ड्राइव को ये आज हमें बता रहे हैं कि रियल लाइफ में चलता कैसे है, होता क्या क्या है उसके अंदर, और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। इट्स नॉट रियली फुल टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस, नॉट रियली फुल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ द कार इज ऑन द रोड, बट एक्सपीरियंस ऑफ इट्स क्वालिटीज एंड व्हाट ऑल इट कैन अचीव। अब इस गाड़ी की लुक्स वगैरह तो आप पहले ही बाहर से देख चुके हैं, ऑटो एक्सपो वगैरह पे हमने अब तक दिखाया था। वैसे भी अब तक आप बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे। सामने से जो इसके लुक्स हैं वो हैरियर वाला ही इसका पूरा सिलुएट है, लेकिन सामने जो ग्रिल है उसे क्लोज कर दिया गया है। बड़ा टाटा का लोगो, और यहाँ पर लैंप्स वगैरह दे रखे हैं और एरोडायनामिक बम्पर दे रखा है, जहाँ पे एडैस वगैरह के लिए सेंसर वगैरह दे रखे हैं, और एडैस के बहुत सारे फीचर्स में आते हैं। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, और बड़े पहिए इसके अंदर आते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे साथ तो इसके अंदर आपको 19 इंच के पहिए मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लुक एंड फील गाड़ी को देते हैं। वो सब बातें हम किसी और दिन करेंगे। आज हम आपको गाड़ी लेके जाते हैं थोड़े से वाटर वेटिंग में, थोड़े से ऑफ रोड कोर्स पे, और दिखाते हैं कि टाटा हैरियर ईवी क्या क्या अचीव कर सकती है। टाटा ने हमारे को इस गाड़ी के साथ एक बड़े 22-23 टन के आर्मर्ड व्हीकल को खींच कर भी दिखाया है। तो पावर, टॉर्क एंड परफॉर्मेंस के मामले में गाड़ी किसी भी तरीके से कम नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। And the steers. Okay. Those steers are the final ones. Like those are, you'll be losing your visibility there. Okay. So we have to depend upon the co-drivers out there. Okay. There will be people out there to guide us. That's the. We can climb it up. We are in the mud and rut mode as of now. We are in that mud. We are in the on that. So we'll slowly climb up with the car keeping to the right. Okay. Extreme right. Yeah, yeah. We'll go for this. Full left? Yeah, full left. Full left and drive slow. No, wait. We're heading towards right. Okay, wait. Yes, Don't now go down. slowly go down. Yeah. Keep going down. Yeah, slowly. Don't straighten it. Full left. Full left. Yeah, go down. Go down. Straighten up your steering. Straighten up. Straight. Slowly. Yes. Go Slowly. down. That's it. Easy. Don't worry. Straight. Keep your steering Keep it straight. straight. You turn right. Now we'll go there. We'll go there and take to the right and turn left and stop. Okay, on that one. Yeah. Good, yes. Car is very capable. Very capable. No need of acceleration brake. The car will come out on its own. Wait. Wow. The traction control will sense it and bring the car out. Wow. Just give some minor steering inputs to the left and the right. Don't use the brakes. It will come out easily. Straight, keep it straight. Don't brake. It will come out on its own. So your safety is our priority. That's a bit slow. Like we are trying the traction control pro mode, or it is also called the off-road assist. Okay. So we'll be switching it on. It will be switched on only in the drive mode or on the reverse mode. Okay. So once I press the switch here, you have to activate that with this thing. It is usually this thing, the cruise control thing. Okay. So one press down or one press up, it is activated, and immediately after that you have to press the pedal once. How do you know this is activated? Can you The see green is there. Okay. Got it. So one press of the throttle, it will go on its own. Now you don't have to press the brakes or anything. Okay. Only the steering inputs will do. Once we clear this, The right? camera is coming, okay? We'll do it from here. And then press this again. Okay. Once you release the brake and press the throttle once, it is activated. Yeah. Now use the brake. Okay, it goes on its own. The car. Everything it takes, it does on its own. Yeah, the 6 is the basic speed. Like 6 Okay. is the one where you can start with. So once you reach there, we are stopping it, we are closing it. On the articulation pitch, you go manual. This is the articulation. These are the articulation pitch. So
So it's all about manually controlling that. So the car is not going below 6 kmph Okay. in the traction control pro mode. Okay. Got it. The articulation What thing. speed should we keep? 6. Let's go low. Let's go below 6. We are switching it off. We are switching it. Use the brakes. Use the brakes. You're driving it manually. You can look at that guy and turn a bit to the right. Yeah. Slow. Oh, Let's be slow. slow. That's it. So this thing is all to now we are going under the bridge. Okay. Under the bridge there are a few small steps and a decline. Okay. And in that we'll be demonstrating this thing again, like the traction control pro mode or the off-road assist again. Got it. So we'll switch it on now. It will kick in at 6 kmph once you go for it. Now the car will be all automated. You don't have to press the brake. You just have to steer the car. That's it. The car will go on its own. You release the brake. Now slightly take a left turn, slow down, turn left turn, then fully turn right. Fully turn right. We are going there. Full turn right. Right. So that's a negative incline. What we are doing. Okay. The driver will be down and the co-driver side will be up. So let's go through the edge of it, the right edge of it. Let's go. So we'll switch on the 360. Right edge means on this slope. Oh no, on the right edge of the top. On top. Yeah. Okay. Let's go. So with this 360 camera, we can see that. We have a transparent chassis thing. Okay. So you will be seeing that this is the Nice. transparent chassis. You'll be It's very seeing nice. Very good concept. just like the Land Rover things. Car. For a car of this kind, this is new. So until now we were in the rock road. Now we are shifting. वेल गाइस, तो आपने देख लिया कितनी केपेबल मशीन है। गाड़ी बहुत ही केपेबल है ऑफ रोडिंग पे। कैमरा में भी ये सारे की सारी बातें मैंने दिखा दी आपको। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो जनरली बहुत अच्छा है। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेटअप दे रखा है वो बहुत ही बेहतरीन है। और वाकई टाटा मोटर्स ने बहुत मेहनत करी इस गाड़ी के ऊपर। इफ़ यू रियली आर अ ट्रू ब्लू एसयूवी लवर, आप ऑफ रोडिंग के फ़ैन हैं, आप चाहते हैं कि 4x4 गाड़ी चलाएँ, जेन्युइन 4x4 गाड़ी। और आपने पुराने सफारी के ऐड देखे हैं, टाटा सफारी के जो पुराने ऐड आते थे मिड 2000 में, ये उस गाड़ी का नया वर्जन आप कह सकते हैं। रियली इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट एंड रियली यू शुड चेक इट आउट एट अ डीलरशिप नियर यू। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग। So we're going to go to turn 3 where we stop again and then we set off in boost mode for the top speed run. We are going to hit about 170 plus. The top speed is limited to 180, but in the interest of conserving the brakes, because we're running these cars through the day and it's very hot, we're going to just let off after about 170, 172. We're then going to take it easy again till we get to the middle of the track. Turn 6. That's where your hot lap experience starts in terms of the handling section of the drive, where you can then experience the chassis setup and the new suspension with the frequency dependent damping. So again, you'll feel the G forces of the car. You felt the G forces under acceleration.